All right, so viewers, this is me, Zorez Mughal here, and today we are going to interview Dr. Barkat Charania. And Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Will we start with the beginning with your little bit introduction with my viewers, please? Yeah, sure. I am an orthopedic surgeon, or was an orthopedic surgeon almost in my past life. Past life इसलिए कहता हूँ I passed my medicine in about 1964, which is from half a century ago, more than half a century ago. And I practiced for almost 30 years, maybe 35 years, until the end of 90s. और उसके बाद because I came here for America, so I have not been practicing at all. I've been doing different things in terms of several 501c3s that I'm attached to and I'm working on. So that takes my time, and I'm working very well on those. Great. So as I have seen bunch of your interviews, and you have already discussed a lot about this COVID pandemic situation. So I don't want you to ask you that many questions about that, but we will discuss a little bit. We have a topic is young minds. We have to give the motivation to the young minds. So we'll create some positive vibes for them. Let me just begin with yourself. So we'll just discuss a little bit about yourself, about where you were born and your earlier life, what you have done. How was your? I was born in India. I was born in India, in a little village in Gujarat, or Kathiawar as they call it. From there, after the partition, we moved to Pakistan. In between, I lived in Ahmedabad, which is a large city and capital of Gujarat, which is Prime Minister Modi's town. It's a very large city. Even in those days, when I was there in 1947-ish, 48-ish, they had 100 textile mills in those days. I think it must be much larger now. It used to be called Manchester of India. There was the mill. They usually whistle at the time of starting the work or starting the shift, and at the time of closing. So every time, all the 100 mills would keep on, making the whistles, and that was usually the time that people will used to sort of, coordinate with. Okay, this is now 5 o'clock. This mill and that kind of thing. Anyway, so that is Ahmedabad, and then we went to Pakistan, as I said, and we were in Sakkar for quite many years. Sakkar Sindh, that is. And I did my metric from there from Sakkar, from Sindh University. From there on, I joined the medical college after doing my inter-science. Inter-science I did in Hyderabad, that is Government College Hyderabad at Fuleli, which is really a known Nehar in Hyderabad. Sure. And then I went to Dow Medical College in Karachi and did my graduation there in 1964. And you got your MBBS. That's my MBBS. After that, we traveled to UK and in fact lived there almost for 15 years, doing my fellowship and doing some work and all that kind of thing until almost. So how was your journey immigrating to US? Back in Karachi, I started a hospital. The hospital was 200-bedded hospital. It was a private general hospital, one of the best one, as I say, people call it now, because it's now, I parted with it when I came here in about 1996, 97. It was continued as hospital for some years after that. And then it was converted to offices because it was a very congested area on the Preedy Street and on the Tibet Center in front of Plaza Cinema. Right. So what was the year when you moved to US? I kept coming here from 1985-ish and completely moved here in 1990 kind of thing. But I kept commuting between here and my hospital because my hospital was still working. So I finished with the hospital in 1995 and came here in, I think, 1997. So how was your first 5-6 years here in US?
So you have started your businesses here, or? Yes, because I came a little bit too late. I was almost 60 by the time I was ready to do something here. Uh, I thought it was not wise for me to start the practice here because it's different regulations and you may have to start all over again, all that kind of thing Right. with the licensing and all that. So, and at the same time, I had other responsibilities of settling my own people, and that's what I did. In fact, I settled my nephews, my children, etc. So I went to do businesses basically. So when you came to US, right away you settled in Texas, or you went to another state? Yeah, I came here in Houston, Texas. So I've been Houston, here Texas. since I came here. Okay, okay. And you have done any practices here? MD practice? No, I've not done medical practice here at all. So No. you were doing your startups here, and which uh, niche you were using? You mean business? Yes. What kind of businesses were you? We went into two, three different businesses, and they're all working out right, except that first business that we started was jewelry wholesale, which we have closed now. But other businesses that we did, like we've got nursing home, we are wholesaling gasoline and diesel, and things like that. It's working out right. Right, 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 right. And now, for last 20 years, you are retired. Yeah, my children have taken over, so I'm kind of well, not as much required. I've been retired. But I have seen that you are working a lot on YouTube, and you are doing a lot of research. So will you be sharing with us some of it? Yes, I have. In fact, I started about maybe 5, 6 years ago, putting things on the YouTube, and that was about moments with me, and that was about mostly about health. In fact, I was writing a health blog at that time in my own name, drcharania.org. Unfortunately, that got hacked, and I lost that whole thing. I think I lost all my articles, and I was thinking to start it again, but then I went into the YouTube, and I thought it was not necessary to write it now. In fact, I can speak it. So I started speaking about it. But then I got a little bit busy and sort of, maybe call it laziness, call it other work Right, of the entities that I'm talking about, 501c3s. Um, Again, with this COVID-19 kind of thing, the coronavirus, it made me start this again, and I'm just trying to put the facts on the YouTube in perhaps half Urdu, half English kind of a thing, so that our people can understand what it is all about. And I'm quite concerned. I must say, I'm quite concerned about situation in Pakistan and India because there's a large, big population, and when we take Pakistan, India, Bangladesh, all three together, it is much larger than China, much larger, yes, yes, and it's a very dense population. Our density is about 400 people in a square mile, which is large. In here, you'll find about 200 to 250 per square mile. Our density is there, 400 per square mile, nearly that, 350 to 400. So, and then we don't have the enough medical facilities, and then we don't have enough education, and then call it fortunately or unfortunately, we are very religious back home, and hence I see the tussle between understanding that this is difficult, dangerous virus, and we should not be next to each other within 6 feet. We want to still be together in the mosques, in the funerals, in the qawwalis, or whatever you want to call it. And it is risky. It's a very dangerous thing. Think of it. I mean, I'll give you one little uh, corollary or reference. Reference is this: about 50 days ago, there was a first death in this country. That's yes. how I'm talking about USA. In Mhm. 50 days, there have been 40,000 deaths due to this coronavirus. Yep. Think of it. And then about 80, 90 days ago, there was a first case of coronavirus in Washington state. Now it's almost three-fourths of a million, 7.5 million. So Yes. it's a very fast growing and very
fatal or lethal disease. So, and we don't have any treatment for that. Only thing that we can do is to prevent, and that prevention is very simple. Come to think of it, I take it very very broad view, or from 60,000 foot. If you see anything, you get a broader view, and that broader view is very simple. That the virus lives in a living cell. It cannot live outside the living cell. It's an RNA uh, molecule which stays in the cell, and once it gains an entry into our cell, it starts multiplying there using our protein, our cellular protein, and starts multiplying it. The moment it is out of that, for example, if when I'm speaking, I'm throwing out globules, a little bit droplets. The droplet falls on my table, for example, on my paper or pen or whatever. It can live maybe for a few minutes or a few hours at the most, or maximum 72 hours, as they say, according to new research, if it is on the hard surface like plastic. But otherwise, it will die. So if you can make sure that we do not come nearer within 6 feet of a person who is ill, we don't get it. Simple. But can we do it? And yes, we can. We can do it by maintaining this distance and locking down completely, which they did, but it's a half-hearted locking, I think. It's not as nice as it should be, as disciplined as it should be, as much in unison, I would say. For example, let me go back. I mean, I'm sorry, you did not want to talk about this, but we are talking about No, you. for example, in Wuhan, I don't know whether you realize this or not. Wuhan is a city Yes. like Karachi, Yeah. about twice the size. Mm-hmm. It is in Hubei province, like a province, like Sindh, a province of Sindh. And what they did was they completely locked down Wuhan and completely locked down province, the whole province that is in Hubei province. And they locked it down in January, and they are opening it. In fact, they opened it last week. Yes. Wuhan. It took about 3 months. 3 In months. 3 months' time, and they did not lock down the whole country. They did not. Like what we have done, the locking down is almost like, every single state is closed here at the moment. Absolutely. And the whole Pakistan is closed. You need to look at Pakistan. And that was the order. But in China, they did not do it. What they did was, everyone that was coming out of Hubei, if at all, they were not allowed anyone out at all from Hubei. That's one. If there was anyone going to Beijing or Shanghai or Tianjin or wherever, while going out, if they were to go out and reaching there, that they are not, and they will be quarantined for 14 days. After 14 days, the virus somehow doesn't remain that active. So if that was done for the whole world, if we were locked down, the whole world was locked down in January, I think we would have been open now in 2 weeks' time, 3 weeks' time, 4 weeks' time at the most. But now we are locked down from January, maybe February now. In April, we are still thinking about easing now in 3-phase opening in USA. So 3 phase में ये होते होते मेरा ख्याल 1 महीना और लगेगा. We are at the middle of April, end of May तक में जाके खुलेगा. तो तकरीबन 2.5-3 महीने हो गए instead of 2-3 weeks. और ये अगेन ये मसला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है वो पूरी दुनिया की सिटीजन्स को की हेल्थ को ठीक करने के लिए और ठीक रखने के लिए है, उसके पास टीच नहीं है. As we compare our subcontinental population and we compare with our US population, there is a huge difference. Like if I go outside, I don't see people, because there are a lot of places in metropolitan area and in the Dallas as well. Like there are always thousands of people on the roads, and right now if we go outside, we don't see any person outside, and still we have got like more than 30,000 casualties. But if we see on the subcontinent side, where they don't have that much resources and they are not providing the health services, and they are not doing any like tests
for the patients as well, and they have a lot of casualties they are not going to show. So that's the only way, when they don't have any kind of any kind of facilities, the only way they have to do the precautions, and they are not going to do that. And how you think like it will take time? If we are thinking about here in America, we will be thinking that next month maybe we will be able to go outside, but over there, do you think we'll be able to go outside next month Where? in subcontinent, in Pakistan, Pakistan? India? Uh, Unfortunately, अगेन आज ही मैंने जो एक वीडियो पोस्ट की है उसमें यही कहा है कि उनके नंबर्स बड़े अच्छे हैं, बहुत कम केसेस हैं, बहुत कम डेथ हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। बांग्लादेश का इतना पता भी नहीं हमें, और बांग्लादेश प्रोबेबली इज नॉट ऑल दैट वेल आई थिंक, इसलिए कि कल का नहीं 3-4 दिन पहले एक मौलाना साहब वहां पर बहुत हो गए, वहां अच्छा। पर 1 लाख लोग निकल आए उनके जनाजे में, ओहो। 100,000। वो जनाजा तो कैसे चलता है आपको पता होगा। तो दैट tells me it is going to be very difficult, and that is in the middle of peak of corona in Bangladesh. I think almost peak, I would say. तो कितने लोगों को वो जो कोई इन्फेक्टेड हैं, कितने लोगों को और इन्फेक्ट कर दिया होगा? थिंक ऑफ इट। बिल्कुल। सैकड़ों को, हजारों को मैं तो कहूंगा। तो ये समझ चुके नहीं है, हमारे यहाँ प्रोडी शायद लंबा चलेगा, और लंबा भी इसमें चलने की बात नहीं है इतना, इसलिए कि मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास है नहीं, और है तो बहुत कम है, तो प्रोबेबली लॉट्स ऑफ डेथ विल अकर, अनफॉर्चुनेटली दैट्स माय कंसर्न। large number of people will die, large number, very large number, but then again who am I to say? I sincerely hope कि जो नंबर इसमें दिए हैं शायद 300-400 पाकिस्तान के हैं और 800,000 इंडिया के हैं, बांग्लादेश का भी तकरीबन वही 400-500 में है। तो आई सिंसियरली होप कि ये नंबर करेक्ट हो, और करेक्ट ही रहे, और इसी तरह से रहे। क्यों मुझे नहीं पता, दुनिया से कहीं बाहर तो नहीं है तीनों मुल्क, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश दुनिया में ही है, तो प्रोबेबली वही होना चाहिए जो बाकी के साथ है। जैसे आपको एक और एग्जांपल अफ्रीका की, आज मैं देख रहा था मलावी का, वो भी मैंने शायद उसका एग्जांपल जिक्र किया है। मलावी हैज गॉट तकरीबन 20 लाख की पॉपुलेशन है, 2.2 मिलियन समथिंग लाइक दैट, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट 100,000 डेथ। आज उसके प्रेसिडेंट ने वहां पर कहा है कि 1 लाख आदमी मर जाएंगे, इसलिए हमारे पास तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं। तो उसने आई मीन ही हैज टेकन ए डिफरेंट राउट ऑल टुगेदर। वो कहता है हमें क्या जरूरत है हम लॉकडाउन करने की, हमारे पास तो लॉकडाउन तो करें जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी है उससे ज्यादा इसके ऊपर जोर ना आए, वजन ना आए, उसके लिए करते हैं। जैसे हमारे पास है से 10,000 हमारे वेंटिलेटर है, तो इतना लोगों को इन्फेक्ट ना होने दो कि आपको 12,000 की जरूरत पड़े, तो जबकि आपकी हॉस्पिटल पे इतना दबाव आ जाए कि हॉस्पिटल निजाम टूट पड़े। तो हेंस ये एक बेसिकली इट्स बैलेंसिंग मैकेनिज्म। तो अभी खोला है, वो भी इसलिए खोला, आप शायद देखते होंगे टेलीविजन पे, न्यूयॉर्क के मेयर बताते हैं, oh we have got enough ventilators now that if we have got more patients we can look after them। yes। तो भाई जरूरत ही क्या है, 15 दिन और रुक जाओ। बिल्कुल। ये भी तो हो सकता है ना, और लोगों को बीमार करके उनको हो सकता है उसमें से कोई डेथ हो जाए। व्हाई वुड यू डू दैट? बट देन आई वाज टॉकिंग अबाउट मलावी का तो प्रेसिडेंट कहता है हमें तो सोशल डिस्टेंसिंग हम जरूर कर रहे हैं, मास्क शायद पहनेंगे, बट हमने लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है, और लॉकडाउन हम कर नहीं सकते इसलिए कि हमारे पास खाना नहीं है। अगेन दैट्स अ बैलेंसिंग मैकेनिज्म। बैलेंसिंग मैकेनिज्म किस तरह से है कि एक तरफ से या तो बंदा भूख से मर जाए या बाहर निकल के कोरोना से मर जाए। तो क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज इतनी नहीं है मेडिकल, तो वो कहते हैं ठीक है हम कोशिश करेंगे कि भूख से भी ना मरे और कोरोना से भी ना मरे। तो इट्स अ रियली एवरीवन हैज गॉट देयर ओन प्लान, आई वुड कॉल इट। इफ यू डोंट प्लान इट फेल जनरली, so you plan। तो उन्होंने ये प्लान किया है कि विल गो फॉर द हर्ड इम्यूनिटी, इवेंचुअली सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, इतनी इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी और कोरोना मर जाएगा। ये वो कर रहे थे यूके वाले। यूके में जो आई थिंक when everyone pressurized उनके प्राइम मिनिस्टर को, then he agreed कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, let's have the lockdown, and they did the lockdown instead of the not having lockdown and let thing happen naturally in natural course। जो होना होगा, जितना मर जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी और वायरस विल गो अवे। बट देन दिस इज डिफरेंट प्लान। लेकिन डॉक्टर साहब ये चीजें जो हैं वो हमारे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए टेंशन तो है,
कि उनके पास चॉइस है कि या तो वो भूख से मर जाएं या फिर जो है वो कोविड से उनके लिए जो है वो कैजुअलिटीज हैं। तो हमारा जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या हमारा जो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि पोश एरियाज हैं हमारे, उन लोगों को तो आप जो है वो डेफिनेटली कोई पैगाम दें कि वो बिल्कुल अपने घर से बाहर ना निकलें और ये प्रिकॉशंस जो हैं वो स्ट्रिक्टली लें। देखिए, पैगाम में फर्स्ट ऑफ जो आपने कहा, आई वुड नॉट एग्री विद दैट रिस्पेक्टफुली, इसलिए कि जान जो है ना सबसे ज्यादा कीमती चीज है। अल्लाह ताला ने जो बनाई है लोगों को, तो वन ऑफ द रीजन दैट आई वाज लिसनिंग टू वन ऑफ द मौलाना ओनली अबाउट 3-4 months ago, तो उसने ये कहा है इंसानों को, साहब आप मेरी इबादत करो। तो इबादत तो आप कर सकते हैं जो आप जिंदा हैं, बिल्कुल जिंदा ही नहीं है तो इबादत कैसे करेंगे? तो आई थिंक लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड एज बेस्ट एज पॉसिबल, एज लॉन्ग एज इज पॉसिबल, ताकि खैर वो सबके अपने अपने तरीके हैं, वो करें सब इबादत कर सकते हैं, इबादत करते रहें, या कम से कम लुक आफ्टर करते रहें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। दैट्स वन। तो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात इसके अंदर नहीं है। इस एवरी सिंगल लाइफ इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर। और कोरोना का जहां तक ताल्लुक है, या वायरस का जहां तक ताल्लुक है, बीमारियों का जहां तक ताल्लुक है, वो कोई ना गरीब को देखता है, ना अमीर को देखता है, ना काले को देखता है, ना गोरे को देखता है, ना वेल्थ को देखता है, ना पॉवर्टी को देखता है। वो तो सबको लग रहा है, बिल्कुल एवरीवन विल हैव इट। और ये जैसे आपने यहाँ पर देखा कि वो जो जो न्यूयॉर्क के मेयर का भाई जो टेलीविजन का जो है जी कुमो, तो उसको भी लग गया, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड को भी लग गया। तो ये बिल्कुल तो जिसको जो सामने आएगा उसको लगेगा, जो ख्याल नहीं रखेगा। प्रिवेंशन इज द ओनली थिंग दैट यू कैन डू, एंड दैट प्रिवेंशन एवरीवन मस्ट डू, इंक्लूडिंग दी पुअर। एंड टू बी एबल टू डू दैट, ये बेसिकली 2-4-6 हफ्ते की बात है। और 2-4-6 हफ्ते अगर वो जो लोग रिच हैं, वो अगर अपने जो नॉट सो रिच लोगों को अगर सपोर्ट करें, जो उनके तो ये एम्प्लॉय वक्त गुजर जाएगा के करीब इंशाल्लाह। रहते हैं। क्या तो ये करने की बात है, मगर ये होगा नहीं होगा, कैसे होगा, प्लान कैसे होगा, लीडर्स किस तरह से उनको लोगों को बताएंगे क्या करना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। और मैं खाली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा सूप किचन की लाइन लगी हुई है, आपने देखा है ना यहाँ पर प्रिकॉशंस जो किस तरह से लंबी हो रही है। तो यहाँ पर रोज का खाना वहां पर मिल जाता है लोगों को, जिनके पास खाना। यहाँ पे भी पावर्टी इतनी भाई, यहाँ बिल्कुल पर पावर्टी बहुत है। कितनी है मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक खाली एग्जांपल दूं। ये पिछले साल का फेडरल रिजर्व बैंक का एक रिपोर्ट है, आप चाहेंगे तो मैं आपको भेजूंगा उसके लिंक। श्योर 40% of Americans do not have $400 in cash to be able to use it in times of emergency. सडनली किसी की फौतगी हो गई है, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे टिकट चाहिए, मेरे को ह्यूस्टन से, $400 मेरे पास नहीं। दैट्स द सिचुएशन 40% ऑफ अमेरिकन। एवरीवन तो हियर यहाँ पर पे पावर्टी यहाँ चेक पे भी, डेफिनेटली। तो उनको जो लोग हेल्प करते हैं वो अमीर लोग हेल्प करते हैं, और करना भी चाहिए, ये तो वक्त है। वरना फिर वो ह्यूमैनिटी की जब बातें करते हैं और इंसानियत की बातें करते हैं, उसको फायदा ही नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। लेट्स बी तो जस्ट ये अगर सॉरी discuss about this COVID-19 history, as we have seen like it was in 1918, and then we have side end of the 90s, and then it was in 2003. So what was that, this Ebola and then the Spanish flu? So how, as you have experience, so how that time particular people have covered, and how long was it pandemic in that time? देखिए 1918 1920 का जो पेंडेमिक था, स्पेनिश फ्लू जिसको ये लोग कहते हैं, इट्स अगेन द सेम, वेरी राइटली आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ये सेम फैमिली ऑफ वायरस है, कोरोना फैमिली ऑफ वायरस, इसमें Yes. सैकड़ों हैं वायरस। एक वो स्पेनिश फ्लू वाला था, दूसरा सार्स था, तीसरा मर्स था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये सब एक जैसे ही हैं और उसमें कोई लंबा फर्क नहीं है। जो हमारा नॉर्मल फ्लू होता है वो भी वही है, कॉमन कोल्ड जो हम कहते हैं जुकाम, वो भी वही है, बट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। हेंस उनकी वैक्सीन जो होगी वो डिफरेंट होगी। अगर वैक्सीन आती है तो जैसे फ्लू की एक वैक्सीन हम लगाते हैं, इसकी वैक्सीन डिफरेंट होगी, इसलिए इसमें टाइम लगेगा, और इट टेक्स अबाउट अ ईयर टू डेवलप अ वैक्सीन।
राइट। तो ये सारे एक जैसे होने के बाद इसमें डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल फ्लू है वो तकरीबन 4-5 आदमी को हो, उसके अंदर एक आध आदमी को लगता है, फिर 4-5 आदमी में से एक आध आदमी को लगता है। दिस इज जस्ट ऑपोजिट। ये एक को हो तो 4 आदमी को लग जाता है, तो इट्स ऑलमोस्ट 15-20 टाइम्स मोर इफेक्टिव। दैट्स वन। सेकेंडली, वो जो फ्लू जो हमारे पास हर साल होता है उसमें 1000 आदमी में से एक आदमी मरता है, इसमें 1000 आदमी में 20 आदमी मरते हैं, तो 20 गुना ज्यादा फेटल है, 15-20 गुना ज्यादा फैलने वाला है और 20 गुना ज्यादा फेटल है। दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, विच somehow मुझे ये पता चलता है कि ये क्यों इस तरह से नहीं बताते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। बड़ी सिंपल बात है ना। डेफिनेटली, दैट्स तो व्हाई वी वांट। 20-15 गुना वो और 20 गुना वो, तो 300 गुना ज्यादा खराब है ये। 15 गुना 30, 300 गुना। ये दिस इज सो सिंपल, किसी को भी बताएंगे समझ में आएगा कभी ये तो इतना खराब है, तो ध्यान रखो 15-20 दिन बैठ जाओ घर पे, महीना भर बैठ जाओ घर पे। मगर ये समहाउ क्या इसके अंदर रीजन है मुझे नहीं पता, प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। और एक्सप्लेन करने के बाद जो जिस तरह से मैंने कहा कि ये अमीर लोग या जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 501c3 जिसकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोशिश करके गरीब लोग अगर हैं जिनके पास खाना पीने नहीं है तो उनको इससे गोइंग ओवर दैट हम्प, जैसे अंग्रेजी में ये लोग कहते हैं ना, गो ओवर दैट हम्प एंड मेक श्योर कि दूसरी तरफ सब लोग ठीक हो जाए। और इसकी भी मेरे पास कैलकुलेशन, मगर आपको टाइम मेरा ख्याल इतना नहीं होगा, वरना मैं आपको कैलकुलेशन बताता कि बताऊं 3-4 मिनट लगेंगे इसके अंदर। मैं बताऊं, मीडियन इनकम अमेरिका की एक फैमिली की 61,000 है। यस, राइट, दैट मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तकरीबन 60,000, 61,000। तो 1 मिलियन अगर आपके पास हो आज और आप काम करना बिल्कुल बंद कर दें तो आपको 15 साल लगभग चलेगा। यू डोंट हैव टू वर्क 15 साल अगर इफ यू वांट टू लिव लाइक अ मीडियन इनकम फैमिली, जो कि लोग रहते हैं अमेरिका पूरे का मीडियन इनकम ये है, तो लाखों लोग रहते होंगे, ठीक है ना, अपने पास जो 33 करोड़ लोग हैं। तो आप सोचें कि मिलियन अगर 15 साल चल सकता है तो बिलियन कितने साल चलेगा? 15,000 साल। डेफिनेटली। तो बिलियनर हमारे पास इतने सारे हैं जिनके पास 15,000 साल की खाने पीने की वो पड़ी हुई है। एंड इफ दैट इज सो, ना कौन 15,000 साल जीने वाला है? कांट थिंक ऑफ इट कि कैसे लोग इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा करके जब इकट्ठा करके रख सकते हैं, जबकि अगले के पास बराबर वाले के पास खाने के लिए नहीं कल। Definitely. And that is what needs to be preached, told to people. Preached is that requires preaching, but it requires explaining only. It doesn't require preaching, and that's why it's so simple. See? Yes. So carry on. So my next question is, as we have discussed this thing, like people have to come out and they have to help other people's, definitely, and they have to take care of themselves. Every single one has to take care of himself. So the next question, sir, is as we are a young people, we are young minds. So if somebody have just start up his life and he's like 20, 25 or 26, he just start up his companies. So I want to ask you, give them, like, with your experience, give them some motivation. So all these things happen and how they can come out of it. Like they are getting into the depression, like what everybody is saying, like what gonna happen next day or how the things will go. So I want some kind of motivation with your experience. इसका बड़ा सिंपल जवाब है कि nothing stays. Change is the only constant thing. एक मकाला किसी का है, मेरा नहीं है. Change is the only constant thing. आज अगर यहाँ है तो कल वहाँ होंगे, आज अगर ये है तो कल वो होगा. तो चेंज तो होना है, और इसमें भी चेंज में कोई सालों नहीं लगने हैं, इसमें तो 2-3-4 हफ्ते की बात है. By what, as you said earlier, by about May end we will be all working hopefully, और जून में इंशाल्लाह वापस वही तकरीबन रूटीन पे आना शुरू हो जाएंगे. एग्जैक्ट रूटीन नहीं आएगी प्रोबेबली, इसलिए कि हम जो अभी सीखे हैं कुछ, जैसे घर पे बैठ के काम करना, टीवी पे बैठ के काम करना, और रिमोट से काम करना, एक दूसरों से हाथ नहीं मिलाना, ये हम भूल नहीं जाएंगे, ये हमें याद रहेगा. बिल्कुल. बल्कि मेरा ख्याल है हम जो जापानीज लोग करते हैं वो करते हैं, शायद वो करेंगे, या इंडियन लोग जैसे नमस्ते करते हैं तो नमस्ते करेंगे, या जो भी है हाथ नहीं मिलाएंगे. कुछ 6 months मेरा ख्याल है, देखते हैं चलें.
तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज गोइंग टू गो, अंग्रेजी में ये लोग कहते हैं दिस टू शेल पास, ये भी चला जाएगा। और जब कल आएगी जो, तो उसके अंदर अभी से प्लान बनाए, प्लान ये बनाए कि यू स्टे एक्टिव, स्टे इंक्विजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर इंक्विजिटिव यू लर्न, इफ यू आर नॉट इंक्विजिटिव यू डोंट। You have got to keep on asking questions. There are 5 questions, पता नहीं आपको किसी ने बताया कि नहीं। What, when, where, how and why। ये 5 सवाल अब किसी भी चीज को पूछेंगे, अब हम ये क्यों कर रहे हैं, Yes. क्यों कर रहे हैं, व्हाट कैसे जानी है, वेयर यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं, ह्यूस्टन में आप न्यूयॉर्क में हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि लोगों को बताना है। You will find the once you start finding the answers of anything, कोरोना क्यों आया इसका भी जवाब होगा, फिर हमने आगे क्यों बढ़ना है उसका भी जवाब, इससे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, आई, 5 सवाल का जवाब हर चीज के लिए पूछ लें, किसी से मिले तो भी ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कितने बच्चे हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट कहने का मतलब ये है कि इफ यू रिमेन इंक्विजिटिव you learn every day and you don't stop learning। and Absolutely. second thing is जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, try and learn to empathize। empathy अगर आप में है तो दूसरा बंदा जो तकलीफ में है उसकी आप तकलीफ को महसूस कर सकेंगे और मेक श्योर कर सकेंगे उसको आप हेल्प करें, rather than जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि साहब 15,000 साल की अगर मेरे पास खाना है और मैं दूसरा बंदा मेरे सामने है, उसको एक वक्त का खाना नहीं है, उसको मैं ना दूं या ना दे सकूं, तो आई थिंक वो इंसानियत की बात जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो तो फिर थोड़ा मुश्किल वाली बात। तो ये अगेन मे बी एवरीवन may not be able to learn, but I think people should learn and people should make sure that everyone learns। At the end of the day, we are human beings, we need to understand each other, we need to look after each other। love, compassion, empathy, ये हमारी क्वालिटीज हैं, इसको हम अनफॉर्चुनेटली किसी में कमोबेश भूल जाते हैं, तो फिर से याद दिलाने की बात है एक दूसरे को। एंड दैट्स अबाउट ऑल। Thank you so much, sir. Thank you so ठीक है much. जी, And alright, first of all, it's my pleasure to be talking with you, and we have learned a lot from you. And as I asked you, I will only get 30 minutes of you, and I got less than 30 minutes. So it's longer। we'll just go to end up this show. Okay, Last 2-3 minutes, I just want you to give message to all our audience in subcontinent Pakistan, also people living in New York as well. We have a huge population in New York, and in that particular area, we have a lot of casualties and cases as well. So I just want you to give us 2-3 minutes brief message to my all audience. I think the message I already given, same message, I'll repeat it almost in a different way, that this too shall pass for sure। Don't get depressed, tomorrow will be brighter than what it is today। Just make sure that today, when the things are difficult, stay home as best as you can, stay safe, keep on washing your hands, stay 6 feet distance, and I think we will be all there in about maybe 2-3 weeks time on the other side of the picture, other side of the bank of the whatever the problem that we are in here, and I think we will probably all be okay very soon, and well, we'll just remember this as a past history in which we all helped each other, worked with each other, and made sure that we all safe and sound on the other side। Thank you so much. Thank you for Thank all you। viewers. We had like 5-6 people who are watching our this broadcast, and I'm very thankful to them as well. So we will be again coming with a different personality, and we will be definitely discussing more things as well. So thank you very much for all. Thank you very much, Dr. Slab. Thank you. All right, Janab. Thank you।